Hey guys, welcome to my home renovation video. आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है. You guys know me as a doctor and as a dermatologist in making जो स्किन केयर वीडियोस एंड टिप्स एंड एजुकेशनल वीडियोस आपके साथ शेयर करती है. पर आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है. दिस वीडियो इज़ बेस्ड अपॉन वन ऑफ माई हॉबी दैट हैज़ बीन प्रेजेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, interior designing. Lately I have renovated my bathroom and I am going to show you how this renovation went and how was the process like. I did it after a very long time and I thoroughly enjoyed the process and I really wanted to share it with you guys. I'll try to be very regular in sharing more videos related to interior designing with you. So let's start today's video. So this is a before image. Like you can see that this area needs a lot of renovation. The mirror, the lights and the vanity, everything needs to be changed. So after deciding the budget and everything, we started the process. सबसे फर्स्ट स्टेप ये था कि हमने अपना मिरर चेंज करना था. आई हैव ऑलवेज वांटेड अ राउंड मिरर फॉर दिस वैनिटी. तो मेरा एक बंदा है जो आयरन का काम करता है. बेसिकली आई आस्क्ड हिम टू मेक दिस राउंड मिरर फॉर मी एंड दिस इज़ द इमेज सेंड बाय दैट पर्सन. एज यू कैन सी कि ये पेंट होने से पहले का इमेज है जिसमें आपको मिरर दिखाई दे रहा है. And it's a round mirror and I'll show you in the next picture के installation के बाद कैसा लग रहा है. This mirror costed me around 4,000 rupees, which was very reasonable, including the mirror and the entire structure. Other than that, इस mirror की dimension 41 inches है. ये image installation के बाद का है. 41 inches मैंने इसलिए रखवाया जिस तरह मैंने आपको पहली पिक्चर में दिखाया था कि पीछे बैकग्राउंड में there were lights and everything. I had to cover all the होल्स जो उनकी वजह से हुए हुए थे, बिकॉज अगर होल ना कवर करें ऑब्वियसली दे कैन बी फिल्ड बट उनकी इतनी अच्छी नीट फिनिश नहीं आती. सो आई डिसाइडेड टू पुट अ ह्यूज मिरर जो पीछे के सारे बैकग्राउंड के होल्स और चीज़ों को कम्प्लीटली कवर कर ले. एंड आई एम ऑल्सो अ फैन ऑफ बिग मिरर्स. And you all can see just with the installation of these mirrors, the entire thing looks a lot better. So the next step was the installation of the vanity. The vanities मैंने बहुत जगह ढूंढी but I was never satisfied with any vanity I saw. और even जो मुझे कुछ थोड़ी बहुत पसंद भी आती थी, they were out of the budget, they were extremely expensive. So I got the entire structure made myself from my carpenter. I bought these sheets and I bought the material myself और मैंने carpenter को दिया, उसको design दिखाया and showed him what I wanted and he made it perfectly according to my expectations. इसके अलावा जो हमारा बेसन था, इट वॉज एन ओल्ड बेसन विच वॉज बॉट फ्रॉम केल अराउंड 4 years ago, जो घर में कहीं पड़ा था एंड इट वॉज नॉट इन यूज़ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. So I used that in this vanity. Other than that, tap I got from City Sadar Road and it costed me around 3,500 rupees and it was beautiful and loved it at the first sight and it completely matched my mirror. So other than that, ये जो बॉक्स है इसके जो ब्लैक वाला बॉक्स है इसके नीचे अच्छी खासी स्टोरेज और स्पेस भी बन चुकी है जिसमें मैं अपनी चीज़ें स्टोर कर सकती हूँ. And this is the final product after the installation of the lights. I completely love it. The flowers मैंने वही यूज़ किए हैं जो ऑलरेडी मेरे पास थे. वॉज इज़ बेसिकली जो ब्लैक वॉज फ्लावर्स के नीचे नज़र आ रहा है, इट्स बेसिकली ट्रांसपेरेंट वॉज जिसके ऊपर ब्लैक स्प्रे पेंट हुआ है. एंड आई गॉट ऑल दीज टॉयलेटरीज फ्रॉम चाइना मार्केट फॉर अराउंड 1,500 rupees and they absolutely match the entire thing and I am completely happy, more than happy with entire process. Lighting is also a very important component of how your entire vanity looks. So I got this light from a shop right opposite DHA2. I think it went really well and it also gave a lot of light to my entire washroom and I absolutely love this light.
thank you so much for watching my video. I hope you love this home renovation series. Don't forget to subscribe to my channel and also follow me at Instagram at Dr. Namra Aziz. I'll keep updating you with the more renovation videos. Thank you so much. Bye bye.